In each of the question 1 to 24, write the correct answer from the given options. 196 is the square of which number? This is where these are easy question, basic questions. Okay, so don't think these questions will come in your exam. Okay, these are very basic questions. Just we have started. That's why we are doing this. Okay, so 196 is okay. Very good. 14. Okay, so question number 2. Which of the following is the square of an even number? Anyone? 144. 144. Why? Why? Why 144? Why not 169? Why not? Because its end is divisible by 2. Yes, it ends with a square number. The unit place number is a square number. That's why we can say that this is a square of an even number. Okay, this is a square of an even number. Okay, good, very good. Question number 3, a number ending in 9 will have the unit place of its square as, what will be the number? 1 1. Yes, for 9 and 1, any number which has unit place 9 or 1, the square of that number will have unit place only 1. Okay, clear? Okay, next question. Which of the following will have 4 at units place? Which one have 4 in unit place? Which of the following will have 4 at the units place? Anyone? 62. 62. Yes. Okay. So 2 has whatever is the number. If unit place has 2, the unit place of its square will have 4. Okay. And which is the other number which will have 4 at its unit place? Which other number? Which other number will have 4 as a unit place number after squaring it? Anyone? 8. 8. Yes. It's 8. 8 and 2. 8 and 2 has 4 in its units place if we square that number. Okay. Yes, sir. Okay. Pratyush, you are getting? Yes. समझ में आ रहा है, Pratyush? Yes, sir. Okay. Question number 5. How many natural numbers lie between 5 square and 6 square? If you take 10. the square of 5 and 6, 10. Very good. How you can say this? How you can say this? Pratyush, how you can say this? 10 answer. Why it is 10? Sir, जब 5 into 2 करेंगे तो सर 10 आता है. Okay. नंबर के 2. Formula is 2 into n. सर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर के बीच में 10 नंबर होते हैं. हाँ, 10 नंबर होते हैं. कैसे बता सकते हैं? क्यों होते हैं 10? काउंट करके बता रहे नहीं. जो भी फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स. ठीक है, फर्स्ट नंबर का डबल होता है. ठीक है. अगर मैं बड़ा नंबर कोई पूछूं, जैसे मान लो कि 24 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट आएंगे? 25 के स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे? कितने नंबर्स आएंगे? कितने आएंगे? एनीवन? कितने आएंगे? 48 सर. 48. वेरी गुड. 48 नंबर्स आएंगे. 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में 48 नंबर्स आएंगे. 24 into 2, 48. वेरी गुड. सही है. Okay, question number 6. Which of the following cannot be a perfect square? Which cannot be a perfect square? A, B, C, D. सर ऑप्शन नंबर ए. Option number A. How? No. Cannot be a perfect square. If 1 is there, it can be a perfect square. सर 198. Yes, 198. If unit place has 8, okay, then you can say that it cannot be a perfect square. This can be or cannot be. 529 can be or may not be. 841 may be, may not be. But 198 cannot be. Okay, you know the difference between may be, may not be. Okay, and cannot be. What is the difference between these two? Maybe, may not be means there is a chance. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Yes, और cannot be का बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है. Okay. Question number 7. The ones digit at the cube of 23 is. This is cube, not a square. सर 9.
Okay, 3 3s are 9, 3s are 27. Sir, 7. Sir, 7. 7. Yes, not 9, it's 7. Okay, if it is a square, then it will be 9. Okay, the ones digit of the square of 23, then it will be 9. It is asking the cube, so it will be 7. Okay. Question number 8. A square board has an area of 144 square unit. How long in each side of the board? How Sir, long? 12 units. 12 units. 12 units. Yes, very good. 12 units. Why? Because, sir, we have to find the square root of 144. Yes. Or you can say the square of 12 is 144. That's why. And the formula for the area is side square. Square, Okay? A square. Side square. So side is Yes, sir. 12, then only it will be 144. The area will be 144. Okay, very good. Question number 9. Which letter best represents the location of under root 25 on the number line? Sir, C. C. Yes, sir, C. Because this is 5. Okay. Under root 25 is 5. So 5 is representing by C. C is the correct answer. Very good. Now question number 10. If one number of a Pythagorean triplet is 2m, then the other two members are? Sir, option number B. Sir, m square plus 1 or m square minus 1. Which one? Sir, B. B. Option number B. Yes, sir. If you forget, then what you can do? If you don't remember, then what you can do? You can take m is equal to 1. So 2 into 1. Okay. 2m. Then the other two are m square plus 1, m square minus 1. Okay, good. It is correct. If I ask 3 is 1 Pythagorean triplet, then what will be the other two? What will be the other two? Sir, 10 and 8. No. What is the meaning of Pythagorean triplet? Pythagorean triplet means it should satisfy the Pythagoras theorem. Okay? Pythagoras theorem. And what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says that if there is 3 numbers a, b, c, then a square plus b square should be equal to c square. Okay? So other numbers are 4 and 5. If Okay, you sir. add 3 square plus 4 square, then it will be equal to 5 square. How? 3 square is 9 plus 4 square is 16. 16 plus 9 it is 25. That is 5 square. Okay? So this satisfies this formula. Okay? This satisfies this law. That's why we can say A, B, C are in 3, 4, 5 are Pythagorean triplet. Why? Because 3 square plus 4 square is equal to 5 square. So this is the concept of Pythagorean triplet. You should know this because this is very important. Okay? Yes, sir. Now question number 11. The sum of successive odd numbers. The sum of successive odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 is Sir, 49. Sir, 49. 49. Why? If we sum all the successive odd numbers, we will get 49. How? Why? You will add this all or you have any formula for that? 7 into 1. In exam you will add this one or you can use any formula for this. Sir, we use formula. Which formula? What is that formula? What's this formula? What is that formula? The first, these are first n numbers, n odd numbers, n odd numbers. Okay, n means what? How many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are 8 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you have formula. So answer will be 64, not 49. It is n square or n minus 1 whole square. See this. See there is a formula here. You can check. We have just yesterday we have learned this formula. See. See this one. The sum of first n odd natural numbers is given by n square. So you have to just count how many numbers are there and you have to take the square of that number.
Okay. So this answer is wrong. Okay, sir. 49 is wrong. Okay. 49 is wrong. Correct answer is 64. Okay. How many numbers are there? 1, Yes, sir. 2, 3, 4, 5, 6, Eight. 7, and 8. For 8. There are 8 numbers, so you have to take a square of 8. That is 64. So answer is 64, not 49. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Question number 12. The sum of first n odd natural numbers is. Just now I have told you the formula. Sir, n square. N square. N square. Okay. N square. Now question number 13. Which of the following number is a perfect cube? So what are that? Sir, 216. 216. Okay. Yes, sir. So what are that numbers? By which you can say this is a perfect cube? Sir, 6. And other numbers? 1, 2, Sir, 2, 6 and 2. 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 1, 1, 2, 2, 2, 8. Okay. Ending with 3, you will get 3 to the 9 to the 27. Okay. You will get 7. If there is 4, you will take cube. 4 4s are 16, 4s are 64. You will get 4. 5 5 5 are 25, 5 are 125. You will get 5. 6, you will get 6. 7, you will get 7 7s are 49, and into 7 7 9 is 63. You will get 3. For 8, what you will get after cubing it? What you will get? 8 8s are 64, and 8 4s are 32. You will get 2. Okay. For 9 9 9 is 81, and 9 1 is 9. So you will get 9. So for cube, it's very easy to find. Why? You can see here. For 1, it is 1. For 4, it is 4. For 5, it is 5. For 6, it is 6. Okay. For 9, it is 9. So for 1, 4, 5, 6, 9, it is same number. And for 2, it is 8. And for 8, it is 2. Just opposite. For 7, it is 3. And for 3, it is 7. Okay. Yes, sir. So you will Yes, just sir. get this number. If you get these numbers in the unit place, 1, 8, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So every number is there. Okay. Yes, sir. Yes, sir. 2 is there. So how you can say which of the following number is a perfect cube? How you can say 216? Why not 243? Sir, 243 is also a perfect cube. Yes. Which of the following number is a perfect cube? 243 is a perfect cube. How? Sir, it is a cube of 7. 7 7 are 49, and 7 7 is 63. 6 7 for the 28. 29 34. 343, not 343, not 243. It's 343. Okay. So you can have this by, you can check by this long division method. Okay. How you can check? 216 is the cube of which number? Sir, 6. Huh? Sir, 6. 6. 6 into 6, 36 into 6, 6 is 36, 3 6 18 19 20 21. Okay. And 3, what about 392 and this one big number? This cannot be a perfect cube. Why? For 0, it should be 3 zeros. Okay. Yes, sir. 216. This is cube of 6. Okay. The hypotenuse. 216 you can check by this also. You can divide it by prime Sir, factorization. we can check by its factorization method. Yes, this is prime factorization. You can check like this also, but it will take more time. If you check all 4, it will take more time. Okay. Okay, let it be. Question number 14. The hypotenuse of a right triangle with its legs of length 3x, 4x is. Sir, 5x. How? Why 5x? The hypotenuse of a right angle triangle. This is right angle triangle, and this is 3x, this is 4x. Hypotenuse will be 5x. Why? Because we know that 3, 4, 5 are Pythagorean triplet. Okay? 3x Yes, sir. whole square, Yes, sir. 4x whole square. Under root of this you can find. Okay? So under root of this Yes, is sir. 9x square plus 4 4s are 16x. Yes, sir. It will be 25x square under root. So root of 25x square will be 5x. Okay? So without doing this also you can say that 5x is Yes, sir. 5x is hypotenuse. Why? Because we already know 3, 4, 5 is Pythagorean triplet. And if you multiply it by, if you multiply all 3 by 2,
then that number will also be a Pythagorean triplet. How? 2 3s are 6, 2 4s are 8, and 2 5s are 10. 6, 8, 10. These are also Pythagorean triplet. Okay, if you multiply by 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12, and 3 5s are 15. These are also Pythagorean triplet. Okay, if you multiply by 4, if you multiply by 4, Okay, sir. 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. These are also Pythagorean triplet. Okay, Yes, sir. Yes, sir. you should remember this all. Okay, the next two numbers in the number pattern 1, 4, 9, 16, 25 are, what will be the next two numbers? These are related. Sir, 36 and 49. Yes, this is also an intelligence question. Okay, intelligence. Yes, sir. question. Yes. Yes, sir. The next two numbers in the number pattern. So all are what is the pattern? Pattern is all are the squares. Okay, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. Now it will be 6 square and 7 square. So 6 square will be 36 and 7 square will be 49. So 36 49. and 49. This is the correct answer. 36 and 49. Yes. Yes, sir. Now question number 16. Which among 43 square, 67 square, 52 square, 59 would end with digit 1? Which one will end? Sir, 59. 59. Yes. 59. Yes, 59. Why? Because 9 is for 9 and 2. If you square, 9 and 2, no, 9 and 1. If you square these numbers ending with 9 or 1, the square will also end with 1. Okay. So answer is 59. Okay. Question number 17. A perfect square can never have the following digit in the ones place. Sir, 8. 8. Yes. Sir, 1. 8, not 1. Perfect square can never have the following digit. 1, if you have 9 and 2, then it will be 9 9s are 81, 1 it will come, and 1 1s are 1. If you end with 1, the square will come 1. If you end with 9, the square will come 1. Okay, so this is not correct answer. Yes, sir. 8 is the correct answer. Why? It cannot be in your unit place if it is a perfect square. Okay. What are that numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From here you can check. 1 1 is 1, 2 2 is 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, 8 8 is 64, 9 9 is 81. See, which numbers are there? 1 4 9 5 6 6 9 4 1. Okay, so only numbers are 1 4 9 6 5. Okay, 1 4 5 9 1 4 5 6 9, or you can say Yes, 1 4 9 5 6. Then these are repeating. Okay, so these numbers can come only in the square. 1 4 9 6 5. Okay, these numbers. And 0 can also come, but it should be in some, the number of zeros will be some number, means even number. 2 zeros, 4 zeros. Yes, sir, we have to zeros, yes. even Yes, question number 19. even zeros, sir. Even zeros. Number of zeros should be even. Okay. Now question number 19. Yes, sir. Cube root of 1000 will be? 10. The 10. Yes, it's very easy question. 10. The 10, sir. 10. The 10. 10. Okay, question number 20. If m is the square of natural number n, then n is the square of m greater than m equal to m under root m. Sir, greater than M. Greater than m? Greater than M. If m is the square of natural number n, m is the square of natural number n, then n is equal to? This is wrong answer. What will you do if n is Sir, equal to M. equal to m? This is also wrong. How can we it equal to m? Square of M. Sir, N- See, sir, root under M. yes, this is the correct answer. See, if 4 is equal to 2 square, okay, then what will be equal to 2? 2 will be equal to under root of 4. Okay, under root of 4 will be equal to 2. Okay. If you take this square other side, if you want to find n, okay, m is equal to n square, and now you want to find n, okay, then you have to remove this one other side, left hand side, and what it will be?
It will be like m to the power 1 by 2, and m to the power 1 by 2 is nothing but a square root of m. Okay, did you getting my point? Yes, sir. Yes. M is equal to, suppose, n cube, then what will be equal to n? What will be equal to n? Yes, tell me, what will be equal to n? Anyone? If m is equal to n cube, then what will be n? Under root m. Not under root, cube root. This 3 will come this side, and it will be like 1 by 3, power 1 by 3. You will learn this in exponent and power. Okay, in exponent and power you will learn it very deeply. Okay, n is equal to m to the power 1 by 3, that is anything to the power 1 by 3 is nothing but cube root. 1 by 3 means cube root, 1 by 2 means square root, 1 by 4 means fourth root. Okay, so if anything has x to the power 1 by 5, it means it is fifth root of x. Okay, Yes, sir. it will be clear in next chapter, exponent and powers. Okay, Yes, sir. Yes, sir. now question number 21. A perfect square number having n digits where n is even will have a square root with how many digits? Sir, option number D. n plus 1 by 2. A perfect square number having n digits where n is an even number, not odd. Okay, this is answer. Sir, sorry. This is for Option odd number B, sir, B. Yes, Sir, n by n by 2 digit. n by Option 2 number only. B. N by 2 only. Okay, if you have Yes, sir. 4 digits, then it will be, the root will be of 2 digits. Okay, Yes, sir. or if you have 3 digits, then also it will be of 2 digits. Okay, if a perfect square is of 3 digits, then it will be 2 digits, and for 4 digits also it will be 2 digits. Okay, so if there is, in this question, if there is odd number, then this will work. Okay, n plus 1 by 2. Clear? Sir. Yes, sir. Now question number 22. If m is the cube root of n, then n is similar question that which I asked just now. If m is the Sir, cube, under root 3. no, Under root 3. no, Under root. Sir, n by 3. no. Sir, m square. M, where is m square? There is no m Sir, square. m cube. Yes, m cube. This is the correct answer. How? See, m is what? M is the cube root of n, means cube root of n, 1 by 3, n to the power 1 by 3. Okay, if you take this side, so n will be equal to m to the power 3. 1 by 3 will change in 3. 3, if you take 3 power 3 to the other side, it will be 1 by 3. If you take power 1 by 3 to the other side, it will be power 3. Okay, did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now question number 23. The value Yes, of sir. this is, what you will do? Anyone knows answer? Anyone? Sir, 4. Hmm? What is the answer? Sir, 16. Option number C. Sir, 16. Okay, very good. Option number C. Very good, very good. How? Sir, if we under root 144, we get 12. If we plus 52 into 12, we get 64. 64 is a square of 8. If we Okay. plus 8 into 48, we get 256, which is a Which is a? 16 is a cube square of 256. Okay. Yes, Pratyush, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलते क्यों नहीं हो फिर? ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 12 इसका रूट हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 144 is 12. Then we will add this one into 52. Okay, so it will be like 64. So under root of 64 is 8. Then we will add this 8 with 248. Then it will be 256. And under root of 256 will be 16. Yes, sir. Question number 24. Yes, sir. Given that under root of 4096 is 64, then the value of this is, what will be the value of this? So 64.4. 64.4. 60 decimal 4.
Hmm? 60.4. 60 Sir, 64.4. 64.4. Yes, sir. 64.4. Why? This will be 64. Yes, sir. 64 plus 0.4 is equals to Why is it, why 64.04. 0.4? Why under root of 40.96 will be 0.4. So, sir, 6.4. 6.4. Yes, it will be 6.4. Then if you add 60, Sir, option number D. 70.4. yes, Yes, sir. Option number 20.4. 70.4. Yes, sir. 70.4. Correct answer is 70.4. Okay, clear. Yes, sir. Okay, now in question 25, you have to fill in the blanks. You have to fill in the blanks. There are dash perfect squares between 1 and 100. How many? Sir, 10. 10. How? Between, it is asking in between. You can't calculate this one. Don't add 1 and 100. In between. So it is after 1, which one is perfect square? 4. Okay. After 4, 9. After that, 16. 16. After that, 25. After that, 25. 36. 6. After that, 49. after that, 64. after that, 81. after that, 100. Yes, sir. So this you cannot include this one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only 8. Why? Because it is asking between. Okay. So whenever it is asking Yes, sir. between, you don't have to take this one. Okay, 1 and 100. So it will be 8 perfect squares between 1 to 100. There are dash perfect cubes between 1 and 1000. How many? Between 1 and 1000? Yes. What are the numbers? 1 cube of 1 is 1, cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, cube of 4 is 64, 64. cube of 5 is 125. cube of 6 is 216. 7, 343. 8, 512. 9. 729. Okay. And for 10 it will be 1000. So if you Yes, don't remember this, no problem. Okay, you can just leave this one. No, sir. Okay, you can leave this one and you can just calculate this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is also 8. Okay. Yes, sir. Next, the unit digits in the square of 1294 is, what will be the unit digit of this square? If you square this, what will be the unit digit? Anyone? What happened? प्रत्युष क्या होगा? हेलो? Unit place पे Yes, क्या sir. है? Huh? Yes, sir. What will be in the unit place of this square? 2. 2. That's 6. Hello. The units digit in the square of this is, what number will come? प्रत्युष बताओ. Yes, sir. Yes, sir. बताओ, आंसर बताओ ना. सर पूरी डिजिट सारा पूरा बताना है कि डिजिट बतानी है? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? सर 6. 6. यस, 6 बोलो ना. यूनिट डिजिट पूछा है यहाँ पे. क्वेश्चन देखो ना. यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ दिस विल बी 6. Okay. Yes, sir. Next question. Question number 28. The square of 500 will have how many zeros? 4. Okay. So 2 zeros are here. So square will have 4 zeros. Okay. Yes, sir. Question number 29. There are dash natural numbers between n square and n plus 1 whole square. How many? How many?
हाउ मेनी? क्या हुआ, भूल गए क्या सब लोग? यस, सुनील प्रसाद, सत्यम प्रियम सुंदरम तिवारी, तिवारी जी बताइए। Yes, sir. हाँ, बताइए क्या होगा यहाँ पे? Sir, n+1. n+1 होगा खाली, या 2n होगा, या n² होगा? 2n होगा। क्या होगा प्रत्युष? फॉर्मूला पढ़े हो ना स्टार्टिंग में ही बताया, क्या होगा? दुगना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, n का 2 टाइम्स होगा, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ n। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट आएंगे? 5 into 2 10, सिंपल, ठीक है, जो भी रहेगा n+1 हो, n2n हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? 2n, okay, 2n natural numbers between n square and n+1 whole square, okay. The square root of this will have how many digits? How many digits? फटाफट, anyone? बोलो भाई, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। These are very easy questions। ये क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं AISSE में, ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। बोलो, अभी तो पढ़े हो ना ऊपर, कितने डिजिट्स होंगे? ऑप्शन नहीं है तो नहीं बता पा रहे हो? बोलो भाई, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स, अगर इसमें 5 डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? हाउ मेनी डिजिट्स? प्रत्युष बताओ यार, प्रत्युष Yes, sir. बताओ आंसर क्या होगा, कितने डिजिट्स आएंगे? अभी ऊपर क्वेश्चन किया तो है भाई, 24025, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे? आधे आते ना, आधे, ठीक है। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इसको 5 + 1 करके हाफ कर देना है, ठीक है, 6/2, दैट मीन्स 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। Yes, sir. ये सर से काम नहीं चलेगा, बहुत तेजी में पढ़ाई करना है, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। और अगर 2524025 इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? 4. इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? बोलो। Sir, 4. 4 क्यों आएंगे? ये तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो जब Yes, sir. इवन नंबर ऑफ डिजिट्स Sir, होंगे तो 4 डायरेक्ट आएंगे। उसको 2 से डिवाइड कर देना है, हाफ आएंगे इसके, Yes. यानी कि 6 का हाफ क्या होता है? 3। इसमें भी 3 डिजिट्स आएंगे, इसमें भी 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। हाँ, yes, Sir, sir. same आएगा। वही बोल रहा था। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, 5 और 6 डिजिट के नंबर होते हैं ना, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है, द स्क्वायर ऑफ 5.5 इज, 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5.5 into 5.5, स्क्वायर का कल बताया था मैंने, शॉर्टकट कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर? प्रत्युष Sir, 5. कितना आएगा? $3025, पॉइंट यहाँ पे आएगा 30.25, ठीक है, 30.25। प्रत्युष समझ में आया कैसे कैसे आया ये? सर 5.5 की 5.5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तो आता ही है, और ये शॉर्टकट को बताया था ना, स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट, स्क्वायर निकालने का ये शॉर्टकट था। Yes, sir. इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है। बाकी फिर क्या करेंगे? 5 into 5 into 2, 5 5 से 25, 25 2 से 50, 50 इसमें ऐड कर देंगे, इस प्लेस को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 5 2 + 0 2, 5 + 5 10 का 0, कैरी 1 2 + 1 3। अब पॉइंट कहाँ लगेगा?
यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, ठीक है। 0.55 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, एनीवन? प्रत्युष बताओ 0.55 का स्क्वायर क्या आएगा? बोलो। बोलो प्रत्युष। हेलो। तो 3025. 0.55 का मैं पूछ रहा हूँ, 0.55 का ये आएगा? Yes, sir. पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में है तो पॉइंट में ही आएगा इसका स्क्वायर। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? Yes, yes, point नहीं आएगा आंसर. पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे वही तो पूछ रहा हूँ, पॉइंट डेसिमल कहाँ पे आएगा? Sir, 3. 3 से पहले आएगा, यहाँ पे आएगा 0.3025, ये आएगा आंसर, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो हमारा 4 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ Yes, पे sir. point आएगा, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 3 into 5 into 3 इज, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका? 2 into 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? नहीं पता? 2 into 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? Sir, 2 का स्क्वायर रूट 4 times. Square, sir, 2 का स्क्वायर 4. 2 into 2 का स्क्वायर रूट Yes. क्या आएगा? 5.2 का सर हमको लगता है सर 8 आएगा. 8 आएगा। 8 कैसे आएगा? स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर नहीं पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है। 2 into 2 क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2, सिंपल है यार, टेंशन क्यों लेते हो? सिंपल है। देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी 2 बार लिखा होगा उसको 1 बार लिखते हैं बस, ठीक है, वही उसका स्क्वायर रूट होता है। 3 into 3 Yes, sir. इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3। 5 into 5 इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 5, 5. ठीक है। अभी 2 into Yes, 2 sir. into 2 into 2 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? सर 2 आएगा. 2 कैसे आएगा? 2 तो सिर्फ इतने का 2 आएगा, फिर इतने का फिर 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा? सर डबल 2 आएगा. हाँ 4 आ जाएगा, 2 into 2 4 आ जाएगा। 2 into बेसिक क्लियर नहीं है तुम्हारा भी तिवारी जी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 5.3, ठीक है। जो भी 2 नंबर सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5.3 हो जाएगा। Hello, sir. The cube of 100 will have how many zeros? How many zeros? कितने जीरो आएंगे? इसका क्यूब करेंगे तो 100, Sir, 6 zeros. 6 zeros, very good। 2 plus 2 plus 2, 6 zeros, very good, 6 zeros। 1 square meter is equal to how many square centimeter? 1 meter is equal to how many centimeter? 100. 1 meter is equal to how many centimeter? Anyone? बोलो, कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है भाई? कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, लेकिन क्या पूछा है आपसे? स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो इसका Yes, sir. square, Yes, sir. ठीक है। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर 1 का स्क्वायर 2 10,000, ओके। So 1 square meter is equal to 10,000 centimeter square, Yes, sir. okay। Yes, sir. 1 cubic meter is equal to how many cubic centimeter? क्यूब कर देंगे इसको, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, अब इसको क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, इसको क्यूब करेंगे तो कितने जीरोस आ जाएंगे? अभी बताया आपने यहाँ पे, ठीक है। 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 जीरोस। समझ में आया? समझ में आ रहा है भाई?
कोई डाउट है तो बोलो. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. Question number 36. One digit in the cube of 38 is, one's digit at the cube of 38 is, 8 के क्यूब में कौन सा डिजिट आता है लास्ट में? सर 2. 2. ठीक है. और 7 के क्यूब में क्या आएगा? 7 में 3. ठीक है. 6 के क्यूब में क्या आएगा? Sir 7 में 3. Sir 7 में 3. 6 में 4. 6 में 4. हाँ, ये समझ में आ रहा है तुमको? पैटर्न समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंस समझ में आ रहा है? पैटर्न समझ में आ रहा है? 5 में 5, 4 में Sir 4 में 4. हम्म Sir 4 में 4. और क्या बचा? 2 में 8, Sir 2 में 8. 3 में 8. 7. ठीक है. ये पैटर्न समझ में आ रहा है? 7 + 3 = 10, 6 + 4 = 10, 8 + 2 = 10, 5 + 5 5 plus ये काम नहीं करेगा. 4 plus. 2 = 10, 7 + 3 10 आना चाहिए सम. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. पैटर्न ध्यान में रखो. Yes, sir. Okay, once digit in the cube of 38 is, क्या आएगा आंसर? 2. Okay. Sir 2. Square of 0.7 is? 7. Square of 0.7 is? क्या आ जाएगा? बोलो. 0.7 into 0.7. ठीक है. Sir 0.49. 0.4. Yes, 7 7 से 49 और दो डिजिट के बाद 0 लग जाएगा पॉइंट. ठीक है. 0.49, 0.49. Okay, very good. 38. The sum of first 6 odd natural numbers is, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है भाई, n square. n square. n is the number of natural numbers. Odd natural numbers. कितने odd natural numbers हैं? 6. 1, 1, 3, 5, 7. वैसे करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा. ठीक है. Sum of first 6 odd natural numbers. तो 6 odd natural numbers की बात हो रही है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे. क्या आ जाएगा? 36. ठीक है. Yes, sir. थोड़ा पढ़ो इसके बारे में, क्वेश्चंस करो. Yes, sir. बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे. The digit at the ones place is of 57 square is, क्या आएगा ones place पे? 7 7 are 49. क्या आएगा? 9. ठीक है. Yes, sir. 49. 9 9. आएगा sir. The digit at ones place will be 9. तो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये. The sides of a right triangle whose hypotenuse is 17 centimeter are. ठीक है. अगर 17 सेंटीमीटर है हाइपोटेनस है तो आपको ये बताना, ये 17 है तो ये और ये क्या होगा? m square plus 1, m square minus 1 और 2m था ना, यही तो थे. तो क्या हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा आपका m square plus 1, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 16 plus 1 17. ठीक है. तो व्हाट इज m? Yes, sir. m क्या है? m क्या है? व्हाट इज m? m square plus 1 is 17. तो m क्या हो जाएगा बताओ? 17. नहीं समझ में आ रहा. m square plus 1 is equal to 17. Then what is m? m is equal to क्या आएगा? 9 की तैयारी कर लो बाबा तुम लोग. अलजेब्रा पढ़ा नहीं है क्या 8th क्लास में? m square is equal to क्या होगा? चलो जल्दी बताओ. m square is equal to 4. m square is equal to बताओ पहले. m is equal to 4 तो आ ही जाएगा. m square is equal to क्या हो जाएगा? 17 minus 1 that is 16. m square is equal to 16. तो m is equal to क्या आएगा? Under root of 16 that is equal to 4. 4 4 16 होता है ना, तो m is equal to 4.
ठीक है, तो अभी अपने को m पता चल गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट में? नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस 4 स्क्वायर मींस 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो एक साइड आपका 15 हो जाएगा और एक बचा 2m, 2 into m, यानी क्या क्या है? m है 4, 2 into 4 दैट इज 8, ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, क्या आ गया? 15 और 8। ठीक है, ये दो साइड्स आ गए इसके। समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? समझ में आया? बोलो भाई। तो एक बार फिर से समझाना। देखो ये ट्रायंगल है और इसने बोल रखा है कि ये 17 है, ये वाला 17 है, ये आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। ठीक है, बट ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? 2m होता है पहला वाला, दूसरा होता है m प्लस m स्क्वायर 1 m स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1। ठीक है, सबसे बड़ा ये वाला होता है। ओके, सबसे बड़ा ये 17 हाइपोटेनस होता है, ये 17 है। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो आपको m पता चल जाएगा, तो ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। ठीक है, m आपको इससे पता चलेगा क्योंकि ये एक दे रखा है। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, m स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4। ठीक है, m पता चल गया आपको 4 है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? 2 into 4 दैट इज 8। ठीक है, ये तो 17 है ही, और ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, तो ये हो गया 15 and 8। ओके, स्क्रीन से नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो नेटवर्क वीक है। ठीक है, नेटवर्क तो सही करो तो स्क्रीन दिखेगा। यस सर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर 8 o'clock पे। ओके, कल शाम को। कल शाम को 8 बजे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। यस सर।